Thank you, Shoaib. Honorable Chief Guest, Federal Minister Muhammad Ali. Right now, the title is Caretaker Federal Minister, but I think after assuming the power and looking at the dynamics of the ministry, we may say, take care. Arif Habib Sahab, Chairman Arif Habib Group, our guest of honor, and as we lovingly call him, Arif Bhai. Commonly, हम तो आरिफ हबीब नहीं कहते, हम हमेशा आरिफ भाई ही कहते हैं. Pervez Abu Bakr Sahab, the chairman of the Strategic Advisory Board of the MPF and one of the stalwart of the MPF, शुरू से ही वो MPF के साथ हैं. Dignitaries, sponsors, well-wishers, and the members of the forum. It's my indeed proud privilege to welcome all of you in today's ceremony. Today we are honoring two great personalities of the community. Muhammad Ali, who has taken over as a federal minister for perhaps the most challenging ministry of the country at the moment. It might not be the finance, it might not be the interior ministry. It's petroleum, energy and power ministry. And Arif Bhai is one of the biggest consumer of the power sector in fertilizer and cement. So you see, there is a minister who is at the policy maker, and there's a person who is directly affected because of his policies. So the two different interests are sitting on the same table. And this is the objective of today's event actually. This is the basic objective of today's event. कि जहाँ स्टेक होल्डर्स बैठें, बात करें, प्रॉब्लम्स को समझें और उनके पास एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ वो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तलाश करें. एज अ प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, वो सॉल्यूशंस और प्रपोजल्स दें जो मुल्क को इस सिचुएशन से निकाल सकें जिसमें कि मुल्क फंसा हुआ है. We have seen in the power sector over the years कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं. सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल करप्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पावर सेक्टर में मौजूद हैं. आज तक कभी ज़िंदगी में हमने वापडा की बैलेंस शीट नहीं देखी है. मतलब इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. वापडा ऐसा नहीं था 60s में जब ये बनी है तो लोग कहते हैं इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें ली हैं और कॉपी की हैं. बट अनफॉर्चुनेटली whatever has happened in the sector, तो उस वजह से जो है वो बड़े बड़े इदारे जो थोड़े से तबाह हुए हैं, वापडा is one of them. As far as the आरिफ भाई का जो है, आरिफ भाई बड़े कम लोगों को पता है कि आरिफ भाई और मेरा साथ जो शायद अब 40 साल पुराना है. He was my referee when I joined A. Ferguson and Company, and he was my referee till I joined my last job at Cement Pakistan Limited. So throughout, उनसे पूछे बगैर भी और उनके पूछने के साथ मैं उनका नाम इस्तेमाल करता रहा हूँ. तो आरिफ भाई कभी आपको पता नहीं चलता और कभी पता चल जाता. So I use his name as a referee in almost all my CVs. और जहाँ जहाँ मैंने काम किया तो उनका नाम एज ए रेफरी मैंने इस्तेमाल किया. कहना ये कि if you look at the history of our community and the Gujarati community as a whole, irrespective of whether they live on this side of the border or on the other side of the border, you will find some of the finest examples of growth, individual brilliance, जो कि convert हुई institutional brilliance. Now, if you look at the career of even Arif Bhai over the last 40-50 years, from a small stock-brokering business to become the icon of the business community is not a joke. It's a miracle. Similarly, जैसे हम sometimes देखते हैं इंडिया में लोग बड़ी जन आजकल फिल्में भी बनती हैं और बड़ी स्टोरीज बॉलीवुड वाले शेयर करते हैं हमारे साथ कि देखिए जी ये हमारा आइकॉन है, ये हमारा आइकॉन है.
हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, लोग बड़े हम्बल हैं, मतलब हमारे तो काफ़ी स्टार वर्ड्स की कभी को बुक्स ही विचार नहीं लिखी गई है. बट इफ यू लुक एट द सक्सेस स्टोरीज which we have in our part of the world, these are unbelievable. लोगों ने बड़े छोटे से कारोबार शुरू किया and the business became huge, both in terms of values and in terms of contributions to the national exchequer. And the main reason that Pakistan survived against the economic assault after 1947 was those businessmen जिन्होंने अपने अपने बिजनेसेस पाकिस्तान में शिफ्ट की, शुरू किया, और उन्हीं से सक्सेस स्टोरीज फिर निकलती गई. I think Arif is one of them. From a very humble beginning to become a chairman of a conglomerate which a diversified interest in investment banking, fertilizer, cement, real estate is unbelievable. I think जो रीट है आरिफ भाई का, वो शायद इंडिया में भी अभी तक रीट उस फॉर्म में नहीं है. एजाज वुड कंफर्म मी, इट वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ रीट और फर्स्ट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो इन्वेंट हो. एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट आरिफ भाई. He is a patient listener, but in the meantime, his ideas challenge the professionals. और वो चैलेंज होता है प्रोडक्ट डेवलप करने का, और वो प्रोडक्ट डेवलप बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो है वो विजन और आइडिया देता है, और वी एज अ प्रोफेशनल उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. नाउ रीट इज वन एग्जांपल. पाकिस्तान में आज आप देख लें, क्लिफ्टन या किसी भी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट लेके बिल्डिंग बने तो पता चले जी 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है. तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वेल्थ which is surrounding around us and undocumented. ना उनका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, ना कभी कोई कंसिडर करता है उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कभी हाउसवाइफ की जॉब जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं होती. हम लोगों की तो हो जाती है जीडीपी में काउंट, कि सुबह घर से निकलते हैं, काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, शाम को घर आते हैं. बट लुक एट द वर्क दैट द हाउसवाइफ्स आर डूइंग, अनअकाउंटेड. तो रियल एस्टेट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है. और जब रीट आया, आरिफ हबीब रीट्स, और हमने एक प्रेजेंटेशन जो एजाज ने उस वक्त हमारे सामने की थी, इट वाज एन आई ओपनर. एंड बिलीव मी, several people thereafter took that presentation from me, not from Pakistan but also abroad. लोगों का इतना बड़ा इंटरेस्ट आया उस एक प्रोडक्ट में. तो यू कैन इमेजिन कि कितने आइडियाज हैं जो शायद हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और अगर उनको एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाए और प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए प्रोफेशनल्स का, तो दीज आइडियाज कैन डू वंडर्स, नॉट फॉर द इंडिविजुअल हिमसेल्फ but for the country. Few of our friends are there from overseas. जुबैर हैं इधर सऊदी अरब से आए हैं, and I am sure अगर आप इनसे मिलें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बाद में बहुत बड़ी चीज़ हो गया. अब तो क्या स्टार्टअप का ज़माना है, तो आइडिया ही सेल हो रहे हैं. तो रीट इज़ वन काइंड ऑफ दैट आइडिया. तो जो आरिफ भाई के साथ मेरी पिछले 35-40 साल की एसोसिएशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रही, I always found him extremely humble and always a listener to the ideas, and always send the challenge to professionals कि इस idea को convert करें आप. And I think that's one thing which उनको आज उस चीज़ ने जिन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया. तो आरिफ भाई, apart from your corporate and philanthropic activities, we are extremely delighted. Government of Pakistan as usual 20 साल लेट है इस काम में. तो मतलब हमारे मुल्क में तो जनरली लोगों को बाद मर के अवार्ड दिए जाते हैं. आरिफ भाई, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर सीइंग यू विद दिस अवार्ड राइट नाउ. ठीक है. और द पॉइंट इज दैट अगर पिछले 20 साल में या 30 साल में आप देखें स्टॉक एक्सचेंज की हद तक जो आरिफ भाई का कंट्रीब्यूशन था, फ्रॉम आउटक्राई सिस्टम टू दी कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम, formation of the central depository and national commodity and the national clearing, तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो अगर आरिफ भाई अपने टेन्योर में ना करवाते तो शायद इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मुल्क में क्रिएट ही नहीं होती.
ये एक और एंगल है एंटरप्रेन्योर का। इस मुल्क में तो खैर पैसा कमाना थोड़ा सा में लोग शायद पसंद नहीं करते पैसा कमाने वाले को, बट लुक एट द कंट्रीब्यूशंस दैट दीस पीपल आर डूइंग टू द इकोनॉमी। और सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर अस, मोहम्मद अली, single most contribution of these stalwarts is providing direct and indirect employment. एक इंडस्ट्री लगने से दसियों हजारों एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो आई थिंक वी शुड वैल्यू these entrepreneurs, and today's one part of today's event is basically, as a professional we feel कि they are our employers, they are our prospective employers even, और हमें उनको उनकी सर्विसेज को वैल्यू करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कितना ही लेट क्यों ना करे, we should not be late enough. Second is, of course, Muhammad Ali, at a very young age, he is picking up a challenge of managing the most difficult ministry. It is my utmost conviction, and I am sure जिन्होंने भी मोहम्मद अली को अपॉइंट किया होगा उन्होंने ये चीज़ जहन में रखी होगी कि सिर्फ मेमन ही जो है ना वो ऐसी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री ले सकता है। वरना तो हमने इस मिनिस्ट्री में नाम बिगड़ते भी देखे, राजा रेंटल, ये वही मिनिस्ट्री थी, मगर इट इज़ माई अटमोस्ट कन्विक्शन कि ऐसी मिनिस्ट्रीज को सिर्फ वही लोग हैंडल कर सकते हैं जिनका बिजनेस एक्यूमेन हो, जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हो, जो कंपनियों को जानते हों, जो सिस्टम को जानते हो कि ये कंपनियां कैसे चलेंगी और ये सिस्टम कैसे बाहर निकलेगा उस भंवर से जिसमें वो फंस चुका है। तो मोहम्मद अली, आई एम श्योर, इज यंग, ब्रिलियंट, डायनामिक, वी नो हिम फॉर लास्ट many years. बहुत सी कंपनी, अगेन बाय बॉर्न एंटरप्रेन्योर मोहम्मद अली। आई थिंक सिटी बैंक छोड़ने के बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की और कंपनीज बनाई और आगे बढ़े। तो या तो सारे मोहम्मद अलीज में ये ब्रिलियंस है, फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना टू मोहम्मद अली टब्बा टू मोहम्मद अली, या तो ये है इस नाम में कुछ है, ठीक है ना, कि ये सब ग्रास रूट से उठते हैं और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना जी। तो कोई ऐसी चीज है जो इन नामों में है, एंड वी शुड वैल्यू दैट। मैं थोड़ा सा पिछले दिनों देख रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो पार्डन माई लैंग्वेज, थोड़ा सा खवातीन भी बैठी। 40 साल पहले इंडिया को दुनिया जानती थी लैंड ऑफ कामासूत्र, इससे आगे इंडिया को कोई नहीं जानता था। टुडे इंडिया इज नोन फॉर टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर। इंडियंस के फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में आ गए हैं। हम दुबई में जाते हैं तो जो टैक्सी ड्राइवर हमें ले जाता है वो पाकिस्तानी होता है, मगर जिस ट्रेडर से हम मिल रहे होते हैं वो इंडियन होते हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस। जो ड्राइवर हमें होटल से उस ऑफिस पे लेके जा रहा है वो पाकिस्तानी है, मगर जिस आदमी से हम मिल रहे हैं ना, चाहे वो सिंगापुर में मिल रहे हैं, दुबई में मिल रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं, मोहम्मद अली बैठे हुए हैं, वो ग्लोबली मिलते हैं लोगों से। सीमेंट की ट्रेड की मैं बात करूं, एंड दीज ब्रेन्स आर इंडियंस, मोस्टली फ्रॉम इंडियन गुजरात, मोस्टली फ्रॉम इंडियन गुजरात। वो लंदन जाएं, वो बैंकिंग में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, वो ट्रेडिंग हाउसेस में बैठे हुए हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? In the last 40 years, they invested on their human resource, perhaps on their educational institutions, and they converted their human resource into their power. वरना 1.5 अरब की आबादी को डेमोक्रेसी में कंट्रोल करना आसान नहीं है। हम 25 करोड़ की आबादी में घबरा जाते हैं और नहीं संभाल सकते किसी भी वजह से, but with 1.5 billion people in a democratic environment, converting them from their weakness to strength, I think it's commendable. और ये इंडिया में किसने किया? ये इंडिया में उनके एंटरप्रेन्योर्स ने किया, उनके किसी और ने नहीं किया, उनके एंटरप्रेन्योर्स ने किया, और उनके एंटरप्रेन्योर्स ने उस इकोनॉमी को उठा दिया। कोई नैप का केस नहीं बनता, ठीक है, कुछ नहीं होता, एंटरप्रेन्योर्स ने उठा दिया। हमारी कैपिटल मार्केट शायद 5 या 6 के पी पे घबरा जाती है, वहाँ लॉस मेकिंग कंपनीज के 25-25 के पी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
वैल्यूएशंस चेंज कर दी उन्होंने दुनिया में, कि वैल्यूएशंस चेंज कर दी, इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया हमारे सामने लास्ट 30-40 ईयर्स में। इट वॉज नथिंग 40 ईयर्स बैक। मतलब 2005 में मैंने इंडिया में किसी को 1000 रुपये का नोट दिया तो बेचारा मेरे पाँव में गिर गया टिप में। टुडे ऑल टुगेदर चेंज। काफ़ी हमारे दोस्त ओवरसीज हैं, कनाडा से भी आए हैं एक दो दोस्त, तो आप देख लें वहाँ पे उनके जो फूड प्रिंट्स हैं इन द मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स, जो कि प्राइमरीली हमारी मार्केट्स होती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्लिप हो गई हमसे, स्लिप हो। तो वी नीड परहैप्स hundreds of Arif Habibs, hundreds of Muhammad Alis and Maqsood Bhai and Rashid Bhai sitting there. Can you come ahead, sir? तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, और फिर उनको सपोर्ट करने के लिए परहैप्स हमें thousands of मोहम्मद अलीस की जरूरत है पीछे, जो उनको सपोर्ट करें और हमारी इकोनॉमी को एक नए लेवल पे ले जाए। ये जो जुमले हम बचपन से सुनते आते हैं ना कि जी पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ये मतलब रियलिटी में आ जाए, अल्लाह ताला ने दिया है, ज़रूर दिया है, मगर वो इस्तेमाल तो हम ही ने करना है ना, हम ही ने करना है, किसी और ने तो आके नहीं करना है ना। हम ही ने वो रिसोर्सेज को मैनेज करना है और प्रोफेशनली इफेक्टिवली मैनेज करना है। 55 रुपये का यूनिट का बिल आया है मोहम्मद अली भाई इस मरतबा घर में, और बेगम से मेरा झगड़ा हो गया, तो 14 रुपये का यूनिट 3 साल में 55 रुपये का हो गया। मोनिस बैठे हुए हैं, शायद अभी उठे हैं थोड़ी देर के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि इश्यूज हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट देन वी हैव द ब्रिलियंस, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंस इज सेटिंग अंडर दिस रूफ एट द मोमेंट। With these words, sir, I again welcome all of you, and I'm extremely grateful to my sponsors who are supporting me in conducting such event. Thank you very much.